Assalamu alaikum. Welcome everyone. We're going to put this recording online also. My name is Rama Chima and I'm the founder of a media and advocacy program called Beti. Online जो लोग हमारे साथ attached हैं वो जानते हैं कि हम किस तरह का काम करते हैं और अमूमन जब भी बेटियों की बात होती है या ख़वातीन की बात होती है so I have a lot of men and young men coming to the platform and saying आप हमारी बात करती नहीं हैं आप मतलब और ये मैं मानती हूँ कि जहाँ ख़वातीन की बात होती है वहाँ मर्दों की बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दोनों एक दूसरे के बगैर आगे चल नहीं सकते और इंक्लूसिविटी की अगर मैं बात करती हूँ तो फिर जहाँ मैं ख़वातीन की इंक्लूसिविटी की बात कर रही हूँ वहाँ मर्दों की भी इंक्लूसिविटी पे हमें काम करना चाहिए आई एम वेरी हैप्पी दैट two of my dear friends have agreed to do this. Mental health बेशक मर्दों में एक स्टिग्मा ही पाया जाता है. Men are not very comfortable talking about it or even addressing it, and they are in constant denial. So before I begin my session, I'd like to introduce who we have with us today. So we have Hassan Saeed in the blue shirt, as you can see. He's a business consultant from UK. He's a dear friend of mine, and we've had these conversations many times. और उसके बाद हैं जी मुज़म्मिल इजाज़ अहमद CEO मॉन्क फिल्म्स मार्केटिंग में भी बहुत काम कर चुके हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं इन दोनों से अक्सर बातचीत रहती है on what I feel is relevant and what I'm going through. Welcome both of you. Thank you for having us, Rama. Thank you. Thank you, Rama. Thank you for having us. So let's straight away इस सवालात पे जाते हैं. मुज़म्मिल सबसे पहले I would like to ask you, mental health या emotional जो challenges होते हैं ये जब आदमियों के बारे में बात की जाती है तो ये स्टिग्मा क्यों है? यार मेरा ख्याल है it's generally mental health के बारे में ना पाकिस्तान में बात वैसे भी बहुत कम होती है be it men or women. But when it comes to men, we've been idolizing men in a very superheroic form, since ever. और एक additional pressure society का बहुत ज़्यादा होता है इसके ऊपर. So I think that's mostly one of the main reasons because आप जिस तरह से आप परवरिश पाते हैं, the way you grow up in your house, the way you live in your community, that is that's the one factor which impacts anyone's perception towards how they should be and how they should react. और वो जो expectations होती हैं society की और वो जो एक पूरा pressure है, so I think that's one of the core reasons why this is a stigma, and I'm sure this is better in West. I mean, where there's more acceptance towards mental health issues, but when it comes to idolizing men as the superhero and somebody who cannot be broken or is like a it's like a brick, तो वो वाला जो feeling है ना वो it's everywhere in the world. I think Hassan can also contribute better. Yes, and Hassan, how things are in Europe side. Absolutely, Hassan, because you're in UK, I think that's a very good question that Muzzammil put your way. क्या इधर जिस तरह लिया जाता है स्टिग्मा या टैबू समझा जाता है वेस्ट में भी इसी तरह है? I think mental health globally is an issue that we need to stop addressing it as a disorder. It's prevalent in the West, it's prevalent in the East, prevalent everywhere globally, as we've discussed. But I think the more important, following from a very valid point Muzzammil made, that it's an expectation of men and how they deal with certain troubles. And having the expectation is added pressure. If you think about it, having mental health issues for somebody, let's stick to the basics. If somebody has ADHD, dyslexia, or dyspraxia, for example, the way their brain works is very different to a quote-unquote normal person, right? And that's a whole different kind of what's normal, what's normalcy, right? But I think it's a fundamentally flawed concept of men need to behave differently. Men still need to talk about the emotions. And this heroic concept, as Muzzammil rightly put, is a very, very difficult situation that we get put in. I've been a sufferer because there's an expectation. And I think a largely media is to blame for that as well. Like if you talk about the historical movies, the mard are supposed to be strong, they don't talk about emotions.
they are portrayed in a different light, and it just gives a very false sense of security to anyone who's going through this. And I think it's important to be very transparent and honest about everyone's struggle, because everyone does go through this, but we need to seek professional help. One question, this was going to be my next question, Hassan. पर्सनल challenges में, क्योंकि आज हम इसलिए ये शेयरिंग कर रहे हैं कि we want people to feel that there's a unified emotion. इसमें कोई shame की बात नहीं है कि अगर आपको emotional issues हैं या depression, anxiety, किसी चीज़ से भी आप गुजर रहे हैं, especially COVID के perspective में. What are the can you share one experience with us जिसमें आपको लगा बहुत low point थे ज़िंदगी के? Of course, and I think there's been many times, but I've become more adept, more confident in knowing what's the difference between me feeling low that day, if I'm not having a day, or okay, this is a bit concerning. Yeah. So for one example might be when as a teenager, you're growing up and you just think, oh, okay, why am I feeling strange? Why do I have to be the strongest person in the room? And really not seeking help. For example, during the exam times, I was really stressed, really worried that I was going to fail. Luckily, I didn't. I worked some hard, and I didn't, right? And I could have easily thought I'm going to fail. I'm getting overwhelmed and anxious. Why? Now, this is cultural as well. कि South Asian community में अच्छे results लाने हैं, आपको अगर ये नहीं करेगा, आपको अच्छी job नहीं मिलेगी. And you forget, you start becoming so paranoid, so anxious. It's actually ridiculous, and the amount of stress I went through just because of exams. And then you think of, and when my teachers used to say, who weren't from the South Asian community, used to say, it's just an exam. I never really understood what that actually meant until a couple of years ago. And I'm 27, 28 now. And it took me a good part of 27 years to actually realize this. What on earth does an exam actually mean? So instead of thinking, if I fail this exam, my life's ended. No, it's just a learning experience. So moving away from a fixed mindset to a growth mindset has been tremendous. ये बात आपने बहुत अच्छी की है. You know, we generally ये होता है कि एक चीज हमारे साथ होती है या किसी ने कोई comment दे दिया, वो हम ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि that defines us. How can one thing define us? मुज़म्मिल, अब आपसे सवाल करूंगी मैं कि आपसे let's make it more personal. आपको क्या लगता है कि आपके environment के इर्द-गिर्द आपसे क्या expectations हैं जो आपको लगता है कि कभी-कभी कुछ ज्यादा हो जाती हैं? मैं ये नहीं कह रही कि आप कर नहीं सकते, but उनके pressures जो हैं वो आपको लगता है at times overwhelming हो जाते हैं? या देखिए, definitely UK की society और पाकिस्तान की society में there's a lot of difference. ठीक है. I think Hassan also specifically mentioned the South Asian जो ethnicity से belong करते हैं उनके ऊपर कुछ different तरह के pressures हैं. So but being there, at least there's a recognition of this at it's not at broader level but at some level. और दूसरी बात ये है कि जो है ना वो हमारे यहाँ पे इस चीज़ को अभी भी ना, आपको छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई बंदा भी मेंटल हेल्थ के बारे में, स्ट्रेस के बारे में और एंजाइटी के बारे में बात करना चाहता भी है तो यहाँ पे आउटलेट्स ही नहीं है. यहाँ पे कभी किसी ने एनकरेज नहीं किया किसी को. आपके आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपके पेरेंट्स हों, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, कोई भी हों, तो आगे से कह रहे हैं क्या हो गया यार, तुम तो मर्द हो, तुम्हें क्या जरूरत है रोने की, या तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम जो है वो इस तरह वीक फील करो. और दूसरा एक हमारा वो जो एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हमारी रिलीजियस वैल्यूज है ना, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. बिकॉज there's a big responsibility of also earning the livelihood in troubled times or better times within Pakistan or any Muslim, actually anywhere in the world, but specifically अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे भी जो है ना वो रोल्स वगैरह डिफाइन कर दिए गए हैं कि जो औरत है तो उसने घर में काम करना है, मर्द है तो उसने बाहर से चीज़ों को कमा कर लेकर आना है. तो वो जो
एक जो सोसाइटी द वे अ फैमिली डील्स विद द सोसाइटी एंड द वे और जो उसके अपनी इंटरनल स्ट्रगल्स हैं उसके दरमियान में जो ब्रिज है ना वो खाली एक मर्द बन के रह जाता है. तो उस चक्कर में जो है ना आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, दैट्स एक्चुअली एडेड प्रेशर ऑन मेन आल्सो, बिकॉज़ देखें चीजें तो हो जाती हैं, चीजें तो वक्त के साथ निकल भी जाती हैं. where there's night there's always day also. हाँ. बट वो जो गुजरता हुआ वक्त होता है वो एक इंसान के लिए जितना मुश्किल बन जाता है, जितना स्ट्रेसफुल बन जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करना. How as a society we can stand together, how we can deal with those times. I think that's the strength of a community. ठीक है, और वहां पर आके हम लोग जो है ना वो फेल हो जाते हैं बिकॉज हम लोगों की वो बताया और सिखाया इस तरीके से जाता है. मैं आपसे एग्जांपल लूँ तो मैं देखिए गॉड हैज बीन रियली काइंड टू मी. हम लोग जो है ना वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपनी जिंदगियों में एंजाइटी स्ट्रेस से डील करते हैं, बट हम लोगों को अगर इंटरनेट नहीं भी है तो वी एटलीस्ट हैव फ्रेंड्स हु आर have gone through a lot of stuff. We are educated enough to reach out for help also. ठीक है, तो हम लोग किसी न किसी तरीके से डील कर भी लेते हैं, हम उस वक्त को गुजार भी लेते हैं. But I'm thinking about people who are not well educated, who are not well bred also. तो उनके साथ कितना जुल्म है. मतलब अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कोविड के दौरान बहुत सारी फैमिलीज इस तरह की हैं जो बहुत क्लोज भी हमारे हैं और उन लोगों ने फाइनेंशियली सफर किया है. और अब उस केस सिनारियो के अंदर भी जो है वो उसकी जो स्ट्रगल्स हैं मैनेज करने के लिए सोसाइटी बहुत ज़्यादा लोग तैयार नहीं है. वो फिर आखिर में आ जाके जो जिम्मेदारी है वो मर्द के ऊपर आ जाती है कि आप ही ने करना है जो करना है. ठीक है, वो अपनी फैमिली के घर आके मसले भी आप ही ने समेटने हैं, बाहर के मसले भी आप ही ने समेटने हैं, बाहर के मसलों को घर भी आप नहीं लेकर आना है. तो वो मेरा ख्याल है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट व्हिच हसन आल्सो मेंशन्ड इज दैट आउटलेट कोई नहीं है. ठीक है, रिकग्निशन नहीं है, आउटलेट नहीं है और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है हमारे सोसाइटी में भी और इंडिविजुअल्स के अंदर भी. आप जो है ना वो छोटी सी एग्जांपल है, आप इस तरीके से आप पैदा होते हैं तो उस वक्त आपको सिर्फ इतना पता होता है कि आपने रोना है और आपने खाना खाना है या आपको भूख लग रही है. उसके बियॉन्ड आप कुछ भी होगा ना वो आप सीखेंगे, आपने घर में सीखेंगे, आपके कान में अजान होगी तो आप मुसलमान हैं, आपको बैप्टाइज करेंगे तो आप क्रिश्चियन हैं, आपको जो है वो बताया जाएगा कि यार आपने इस तरीके से डील करना है तो वही आपकी आदत बन जाएगी, आपको जो जबान सिखाई जाएगी आप उस पर चल पड़ेंगे. तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है बड़े बेसिक लेवल से इनिशिएट करने की जरूरत है. आई थिंक अगर हम थोड़ा पैटर्न को देखें कि किस तरीके से ये चीजें डेवलप हो रही हैं. अच्छा, अब उसमें वी कैन नॉट ओनली आल्सो ब्लेम द पेरेंट्स बिकॉज वो भी इसी तरीके से पहले बढ़े हैं. तो दिस इज कंडीशन. हाँ, एग्जैक्टली. तो this is exactly the way they know how to also raise up their kids. ठीक है, तो I really hope and I wish that our generation at least अगर हम एक्सेप्ट करें तो हम अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाले जनरेशन को जो है ना हम लोग थोड़ा ज्यादा ब्रॉड माइंडेड इस तरीके से रेस करें जहाँ पे जो है ना वो कि जैसा आपने बात की शुरू में कि इक्वालिटी की बात होती है तो इक्वालिटी में फिर इमोशनल इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, उसमें फिर उनकी हर एक की मेंटल हेल्थ की इक्वालिटी की बात भी होनी चाहिए. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस. बट let's see how the next 10 12 15 years comes out to be. But सबसे बड़ा मेरा ख्याल है हमारी जनरेशन ने ना कोविड फेस किया है. इसके अंदर लोग जो घरों में जो लोग घरों में कोई रेफरेंस नहीं है इसका जिंदगी में इसके अलावा. एग्जैक्टली. तो हम जो सारे घरों में बैठे हुए हैं, हम जिनकी नौकरियां जा रही हैं, जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, खुली हवा नहीं लग रही, और एक तो बीमार होने की परेशानी, ऊपर से इकोनॉमिक हेल्थ जो है लोगों की वो उसकी परेशानी, फिर उसके अलावा फैमिली के एडेड प्रेशर्स हैं, उसके अपने घर में बैठ के लोग ज्यादा लड़ना शुरू हो गए हैं. सारे जो पहले बाहर निकलते थे तो एटलीस्ट दे वाज आउट. तो वो आई थिंक वो इतना सारा प्रेशर है. और अगर हम इस टाइम के अंदर भी और इस वक्त में भी इफ यू डोंट इवन रियलाइज दीस थिंग्स ना, आई थिंक वी माइट नेवर एक्चुअली रियलाइज दिस. ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि हमारी जो बड़े होते कंडीशनिंग की जाती है, जो सोशलाइजेशन होती है वो बड़ी यूनिक होती है और हम फिर वो अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, उनको सवाल नहीं करते कि whether we should be behaving this way or not. मर्दों को कह दिया जाता है तुम चूड़ियां पहन लो, फिर ये कहा जाता है मर्द बनो यार, क्या कर रहे हो. शेमिंग की जाती है ना इनकी, बहुत शेमिंग की जाती है. और अगर औरत है उसको माँ होने पे बड़ी शेमिंग होती है, फिर तुम अपने बेटे का ख्याल नहीं रख रही हो, कौन रखता है, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता. दिस इज व्हाट वी टॉट इन आवर कंडीशनिंग. अच्छा, इधर मैं आपसे एक ये सवाल करूंगी कि वो कहते हैं ना गलतियों से हम सीखते हैं, कमजोरी है हम कुछ ना कर सके. आपने अपनी जिंदगी में जो भी गलतियां की हैं उनसे क्या सीखा है? Rama, I've made too many faults and I'm gonna make too many faults. ठीक है? Excellent. गलतियां. This is the minute you have a positive relationship with failure, that's when you're gonna have success.
I think failure is such an important tool for your success that it's actually unbelievable. And I would encourage everyone to fail every day. Like, I moved away from perfection because perfection does not exist now. And Rama, you know me as a person, I can be very intense, very results driven. Yeah. But then I've also realized that failure, if I fail often, that just means I'm getting closer to the goal. And I don't want to sound like a motivational speaker. I don't want to sound like somebody from Goldcast. It's not this. It's facts, right? The minute you could transition from a mindset of, yaar, mera D grade aa gaya maths mein. Acha, what have you learned from D grades? Where are the holes in your game? Acha, algebra karni hai. Acha, you need to work on this equation. Okay, roger that. Let's go. Take the lesson that we've learned, implement this, and go better. If you get a B, that's still progress. My motto is, Rama, and this has helped me greatly, right? And I shared this with you a few weeks back. And I said, one thing I've realized, and it used to kill me during my teenage years, young adult, and as a young adult, it really used to kill me that I was never able to achieve the goal I wanted. Why? Because I had set myself up for failure. The reality was, I was saying, yaar, agar mera A star na aaya, ya A na aaya, main to bekar hu. So when I used to get that C grade, I used to just, I was so myopically focused on the C that I forgot, acha, yaar, agar maine itni mehnat ki hai कि मेरे 60% मार्क्स आए हैं, let's look at किधर मैं improve कर सकता हूँ कि मेरी 20% ज़्यादा आ रही तो I'll get the A. So it's a little tilt of improvement every day. So I'll give you a classic example why people have such a negative relationship and why they get overwhelmed. If I say to you, Rama, we're going to do £1 million worth of business, right? I'm fixated on the end goal now, right? End goal is this, but we haven't decided, acha, every day what behaviors are going to lead to that £1 million worth of business in a year. If I just sit here, कहते हैं हरकत में बरकत है. If I just sit here and wish, oh, I'm just going to do £1 million worth of business, and then my behavior is I'm on YouTube watching motivational videos, or I'm just lazing around, I'm binge watching Netflix, but I'm not making the necessary activities, I'm not researching my market, I'm not seeing competition. How am I going to get to that point? So it's literally one evolution at a time. So one thing I've realized is you should have an end in mind, but you need to be myopically focused on what's in front of you. I agree. So whether, for example, now that I'm having conversation with yourself and Muzzammil on this webinar, the world could be going ahead. I don't care. I want to give my 100% attention to this, because if I don't give my 100% attention to this, there is no bloody way I'm going to give my attention to anything else. Because then I'm spread out too thin. And that is what failure is. By accepting that you're not going to learn anything from your mistakes. Failure is your best teacher. It's the teacher that you always want to have, but you need to change that relationship with failure. And you need to learn from your mistakes. If for example, you're I don't know, you're in a relationship, I'm just saying, right? If you know your spouse doesn't like certain things, okay, I need to pick this up, I've left my socks on the floor, or I've come home late, my communication isn't there. That's going to cause rifts, right? You've identified it, but you're not working on it. So instead of saying, I'm going to come home late, but let me just text my girlfriend or wife that, okay, hon, I'm going to be 15 minutes late. So I'll see you when I see you, right? I've hit traffic. It's having that constant communication that's going to prevent the failure, prevent the lesson. And I think we just need to transition from this, that yaar, agar mistake bana di, agar aapka D grade aa gaya, you're just going to be a D grade student for life. Not true. Not true.
बिल्कुल। अच्छा, इधर मैं भी एक चीज शेयर करूंगी कि मोस्टली आई थिंक वी आर वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, मतलब वी डोंट कट आवरसेल्व्स एनी स्लैक। जो मेरी तरह के खपती हैं लोग, और मुझे पता है आप दोनों में भी हैं तो और भी होंगे। दूसरी बात ये है कि वी वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स। सेकेंडली, वी डोंट फॉरगिव आवरसेल्व्स, हम अपने आप को माफ नहीं करते। Guilty. और फिर ये भी मैंने बहुत नोटिस किया कि मैं दूसरे लोगों को चांस दे रही थी टू डिफाइन मी। मतलब एट टाइम्स मेरे साथ तो, सॉरी आई एम गोइंग टू से दिस बिकॉज मैंसप्लेनिंग बहुत होती रही। नहीं नहीं, आप ये नहीं कहना चाह रही, आप ये कहना चाह रही हैं। भाई मुझे पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके अलावा बहुत जगह ये हुआ है कि जेंडर रोल, जैसे आप कहते हैं, मीडिया सोसाइटी ने इतने मतलब पैरेलल दो बना दिए हैं कि औरत है तो इस तरह है तो वो औरत की डेफिनेशन में आती है, मर्द है तो वो इस तरह है तो मर्द की डेफिनेशन में आता है। और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो गए हैं। और सपोर्ट सिस्टम भी बहुत से इंस्टेंसेस में मैंने देखा कि लैक करता है। आप दोनों से, मुजम्मिल आपसे शुरू करते हैं कि आपको क्या सपोर्ट सिस्टम मिला और आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ये कभी कभी बड़े सरप्राइजिंग वे से आपको मिलता है, जिससे आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते उससे भी मिल जाता है। सो प्लीज टॉक अबाउट दैट। बिल्कुल, आई थिंक देखिए सपोर्ट सिस्टम तो आपको ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। मैं आपको बिकॉज़ यू टॉकिंग अबाउट एजुकेशन आल्सो अ लॉट, तो आप अगर स्कूल जाते हैं और आपको आपका जो टीचर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, एजुकेट नहीं कर रहा है, तो आप डिलीवर नहीं कर पाएँगे। तो वो आपने हर स्टेज के ऊपर डेफ़िनेटली एक सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक सपोर्ट सिस्टम तो मिलना है, खड़ा होना है। और मेरा ख़्याल है ये इनहेरेंटली हम सीक आउट कर रहे होते हैं, ठीक है? हम इसको रियलाइज़ करें ना करें, हम खुद सीक आउट करते हैं चीज़ों को। और वही बात आती है जिस तरह हसन ने पहले एक्सप्लेन किया, मैं थोड़ा-सा इसको ब्रॉडर टर्म पे ले जाता हूँ कि व्हेन वी सेट आवर माइंड टू समथिंग, तो वी ऑटोमैटिकली आवर फिज़िकल सेंस, आवर मेंटल सेंस एंड आवर सोल सॉर्ट ऑफ वर्क्स टुवर्ड इट, ठीक है? बट अपने आप को पहले उस चीज़ के ऊपर लेकर आना बहुत ज़रूरी है कि हाँ यार, ये आपको एक्सेप्टेंस जिसे मैं कहता हूँ कि यार एक्सेप्ट करें आप कि हाँ, आपने ये चीज़ करनी है। उसके बाद आप ऑटोमैटिकली नोटिस करेंगे कि चीज़ें जो है ना वो आप खुद से करने लगते हैं उस तरह की सारी। तो सपोर्ट सिस्टम तो देखें मेरा ख्याल है इसमें बिल्कुल आप अगर आपको नेचुरली नहीं भी मिल रहा, आपके क्लोज रिलेशनशिप्स के अंदर से आपको नहीं भी मिल रहा है, तो उसके बावजूद जो है ना आपको हमेशा कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। बिकॉज़ कोई ना कोई आपके ज़हन का होगा, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से एंटर हो जाएगा फॉर अ लिमिटेड टाइम और फॉर अ लॉन्ग टाइम, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई कॉलीग हो, चाहे वो आपका इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सोर्स इंटरनेट क्यों ना हो। तो आप हमेशा कहीं न कहीं से आप लोगों की कहानियों से ही अपना सपोर्ट सिस्टम जनरेट कर लेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई थिंक वो आपके अंदर इनहेरेंट है। आप इफ यू रीच आउट, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के ज़माने के अंदर लिविंग इन 2020 जहाँ पे दुनिया इज़ सो वेल कनेक्टेड, ये पॉसिबल है कि आपको सपोर्ट सिस्टम ना मिले। हाँ, अब उसको आप किस हद तक आप चाहते हैं कि वो सपोर्ट सिस्टम आपके साथ एक्ट करे, बिहेव करे, आपको सपोर्ट करे, वो एक डिफरेंट कन्वर्सेशन है। तो जैसे देखें पाकिस्तान में तो वैसे कहने को कहते हैं कि यार हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। हम सारे यहाँ पे बड़े होने के बाद भी यू नो होते हैं और दोस्तों का बिल्कुल मिलना-जुलना ज़्यादा है। लाइफ उस तरह से फँसी भी नहीं है। तो अगर हम कंपैरिज़न करें पाकिस्तान से बाकी जगहों का, तो हम ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें जिनको हम एक अपने सपोर्ट सिस्टम में समझते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारी मौजूद हैं, जो कि मे बी बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक दिस इन द वेस्ट आल्सो। औरतें हम्म। बच्चे पाल रही होती हैं, तो उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं। मर्द जो है वो अगर बाहर निकल के कमा भी रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स के घर में भी रह रहा है, अपनी फैमिली को लेके। तो वो सपोर्ट सिस्टम्स तो हैं। बट आई थिंक इस तरह की सोसाइटी में भी जो ये मेंटल चैलेंजेस है ना, वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज़ जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है ना, फिर वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो आई थिंक मेन रोल जो है ना, वो सपोर्ट सिस्टम का इतना नहीं है। मेन रोल एक्सपेक्टेशन का ज़्यादा है कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या की जा रही हैं, आपको किस तरीके से पाला जा रहा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ बिकॉज़ आई एम somebody who works on a lot of ad campaigns also. So I think that's a brilliant tool in this new age where you can also change behaviors in people. You know, you have to start the 100%. discussion at least. और आप discussion start करने के बाद आपकी जब बात करना शुरू करेंगे आप किसी के बारे में, इसको आप एग्रीवेट करेंगे इस बात को, कॉन्वर्सेशन को, तो फिर आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। फिर बिहेवियर चेंज की बात हम करने की तरफ जाएंगे, ठीक है ना? आज पाकिस्तान में सारे लोग मास्क पहनने को तैयार है ना, तो पहले तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ही मास्क पहनने को तैयार नहीं था किसी मीटिंग के अंदर। तो वो क्या हुआ कि वो मीडिया के थ्रू, प्रेशर के थ्रू, हर तरीके से एक फोर्स बनी और इवेंचुअली जो है ना आपने अपना बिहेवियर जो है ना वो चेंज कर लिया। सर्फ ने कैंपेन शुरू की कि यार इट्स नॉट जस्ट अ वुमेन्स जॉब टू डू लॉन्ड्री, ठीक है? तो वहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। तो वो जो लोग उस चीज़ के बारे में पहले सोचते भी थे ना, तो पहले बात नहीं करते थे, डरते थे कि यार कॉन्वर्सेशन कहाँ से। असल में ना लोगों का खौफ बहुत है कि यार आप
वो महसूस उनका हो भी रहा होगा ना, तो आप मजाक भी उड़ाते हैं ना। मजाक उड़ा, हाँ एग्जैक्टली। तो देखें 5 साल पहले भी हमेशा जो बंदा एक और बात करता था उसको लोग पहले सपोर्ट नहीं करते थे, और आहिस्ता इवेंचुअली आहिस्ता। जब वो बात आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोमेंटम में आती थी तो लोग उस बारे में बात जरूर करते थे। तो ये तो ह्यूमन नेचर रही है। आपको whatever you have achieved you have to pay a price for it, सिंपल सी बात है। you want to be at some place, there has 100%. to be, आपको प्राइस पे करना है उसके लिए भाई, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो पैसों के टर्म में, टाइम के टर्म्स में, किस तरह भी है। तो वो जो चीजें है ना, ये चीजें रियलाइज करना बड़ा जरूरी है। आई थिंक एब्सोल्युटली जो एफ्लुएंट क्लासेस होती हैं, एफ्लुएंट पार्ट्स होते हैं सोसाइटी के, ये कॉन्वर्सेशन वहां से जनरेट होनी चाहिए। ये चीज आज ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं लोगों की लाइफ के अंदर, आज इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं, और आजकल के ज़माने में तो इन्फ्लुएंसर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बल्कि पहले से बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक जब तक ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होगी ना, तो आप कुछ कर ही नहीं रहे उस चीज़ के लिए, आप किसी तरफ जाएंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल तो आई थिंक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है आपको। मेरा नहीं बिल्कुल ख्याल कि सपोर्ट सिस्टम का इशू है। आप चाहे वो एक सड़क पे बैठे फकीर के साथ बैठ के दिल की बात कर लेंगे ना, ठीक है, तो वो 100 रुपए के लालच में आपसे बात कर लेगा दिल की, मगर बिल्कुल आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा किसी न किसी तरीके से। बिल्कुल। और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इनफर्टिलिटी के टाइम पे व्हेन आई वाज ट्राइंग टू कंसीव हैव अ चाइल्ड, मेरे दिमाग में तो सुसाइडल थॉट्स भी आते थे कि यू नो व्हाई कांट आई हैव अ बेबी। फिर पेन भी बहुत थी एंडोमेट्रियोसिस की। एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस वल्नरेबिलिटी, ये मुझे मजबूत करती है। देखें मैंने कुछ सोचा किया तो नहीं ना, आई एम स्टिल हियर एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम इट। टाइम रिकॉर्डिंग का क्योंकि कम रखा गया था, लास्ट चीज मैं हसन आपसे पूछूंगी कि सॉल्यूशंस क्या हैं, हम अपने आप को कैसे ट्रेन करें, टिप्स क्या दे सकते हैं, बिकॉज आई नो आपकी जर्नी में आपने बिल्कुल सीखा भी है और दूसरों को देख के भी सीखा है। 100%. I think Muzzammil said such an important thing: ownership. I just want to add up. कि sports system है. Rama, how many people reach out to you? How many people reach out to Muzzammil? Yeah. कि sir, मैडम मुझे सिखाएं, आप किस तरह ये करती हैं? जी But the thing is, what do they bring to the table? Do they say, you could give them the plan that got to the Rama status, that got Muzzammil to the place where who's going to execute? that person. Exactly. You're not going to help anyone. They've got to take ownership. So one thing I live with and I take great pride in, whatever circumstances life throws at me, whatever I'm finding myself in, it's on me. Yeah. Because all my decisions compound, whether they're good decisions, whether they're bad decisions, they will compound. For example, if I'm eating cheesecake every day, it might not hurt me. It might not hurt me a week's time, 2 weeks' time, 2 months' time, but 6 months down the line, that cheesecake is going to show results. Yeah. I'm going to be a bit fatter. I'm not going to be as light or agile I was. My energy levels, it will compound equally with good behaviors. They compound as well. So if I decide, Acha, I'm going to reach out to Rama, I want the mentoring sport, which I know you do, and you do really well. You've done that with me. And I'm going to say, okay, Rama, you know this situation. How can I improve? You gave me tips. And I said, okay, Rama, my job is to know everything about what you've just told me. And then can we have a conversation? It's about taking ownership, about your learning. And equally, like Muzzammil said, when you're ready, the right people will show up. Yeah. I don't know if this is something spiritual aspect to it. I just don't know. Because I can tell you so many times in my life, there's been situations where I've been ready, where I mentally primed myself. And then I've just realized, wow, this person was always there, but my perspective, my optics have changed. Excellent. So that person is like, wow, okay, I'm going to utilize this. Let me ask Rama, how do you have the courage to do what you do? And then you could just tell me the plan. Then if I don't execute, then I can't blame Rama for not giving me the recipe for success. The reality is there is no recipe for success. The recipe for success is showing up every day, doing the behaviors. Rama, how many times have I messaged you and say, oh my God, I am so sore. I don't want to do my 3 miles. Yeah, many times. And you've said, why don't you take a rest? But I said, I'll take a rest, but not today.
because it's a mental game. You've just got to be okay. The minute you are comfortable being uncomfortable, I think that's success. That you've just got to expect things are going to go down, things are going to go downhill, you're going to get kicked in the head, it's going to go horribly wrong. But you eventually need to think, okay, if my goal is this, I need to have contingency A, B, C. My destination doesn't change, but it'll probably take me, if I take contingency B, because A hasn't worked, or B hasn't worked, but eventually I'll get to my destination. The motto is, you need to seek out people who you want to be like, and then go to work every day and implement and execute and take ownership. That's reality. बिल्कुल. और थोड़ा सा ठीक है, one can take a break, but complacency and वो उससे वाकई I don't think anybody gets anywhere. We've got a request. I think Muzzammil, would you like to share your thoughts? Yep. So I think also on the and also before you begin, once you are done with saying what you're saying, I'm going to stop the recording, and if anybody wants to say anything else, we can do that. Perfect. Yeah. So मेरा ख्याल है बिल्कुल on the concluding note, I think partly yes, आपने जो भी कुछ जिंदगी में करना है, हासिल करना है, आपको खुद से अपने आप को ड्राइव करना पड़ता है. I agree with it. But मेरा ख्याल है कि we also need to cut some slack to our own self. We also need to relax a little bit, because the moment we die, whatever we're creating in this world is only going to remain in this world. So I don't want to get into the religious aspect of it. I'm just saying is that मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने अपनी ज़रूरतों को और अपनी ख्वाहिशों को बहुत मिक्स कर लिया है. हम अगर आपके मुल्क की इकोनॉमी हर साल ग्रो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि लोग भूखे मर जाएंगे क्या? या अगर आपका कंपनी ग्रो नहीं कर रहा है, तो लोगों को निकाल देंगे. मेरा ख्याल है वो जो एक पॉजिटिविटी, मेंटल पॉजिटिविटी एक फर्क बात है, और एक ग्रोथ की पॉजिटिविटी एक फर्क बात है. तो आई थिंक ग्रोथ सिर्फ क्वांटिफाइबल टर्म्स में नहीं होनी चाहिए. ग्रोथ क्वालिटी टर्म्स में होनी चाहिए. अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है, अगर आपकी उसको आप क्वांटिफाइबल टर्म्स में जस्टिफाई नहीं भी कर पाते, तो मेरा ख्याल है दैट्स फाइन. सो आई थिंक वो ये जो चीज़ें ना, ये पूरी दुनिया में इस तरीके से है, और ये जब तक कि पूरी दुनिया में ये चीज़ चेंज नहीं होगी, तब तक आप पे वो एडिशनल प्रेशर रहेगा, तब तक आप अपने आप को तंग करते रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगियों में चीज़ों में हमेशा नाप तोल करते रहेंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप मेजर नहीं कर सकते. कोई पागल है, कौन कितना पागल है, आप मेजर नहीं कर सकते. मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हम लोगों को ना अपने आप को ना थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा ये नंबर गेम से, अपनी ख्वाहिशों से, और हमें अपनी ज़रूरतों के बनाना पड़ेगा कि अच्छा यार, आपको एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू लिव, टू स्टे अलाइव एंड बी हैप्पी. बिकॉज द मोर यू डाइवर्ज योरसेल्फ इनटू योर आपकी ख्वाहिशों में और अपनी वांट्स में डाइवर्ज करना शुरू करते हैं ना, तो आई हैव नोटिस्ड इज दैट आप और ज़्यादा नाखुश होना शुरू हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल्स और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं. तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि यार मेरे लिए बिकॉज आई थिंक बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हुई है, बट आई वुड लाइक टू शेयर कि जब मेरे पास इस तरह के टाइम्स होते हैं, तो दैट्स व्हाट इज दैट हेल्प्स मी थ्रू. और आई थिंक फॉर मी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है ना, वो ये सीखी है कि मैंने अपने साथ कॉन्वर्सेशन करना सीखा है. मैंने आई हैव ट्राइड टू लर्न मोर अबाउट माय ओन सेल्फ. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर माय ओन सेल्फ, बिकॉज even at this age of 34, I don't even know how I will react to a lot of situations in the coming future also. So I think the most important part is that I'm much more aware of my own self and much more connected with myself. I give myself some time. So even if I feel low, मुझे पता है कि यार कोई रैब भी हेल्प नहीं आएगी, कोई मुझे और बंदा आके देख के मेरे पीठ पे थपथपाएगा नहीं और मुझे कुछ हाथ में रख के नहीं जाएगा. मुझे जो भी करना है, मुझे खुद से करना है. मैंने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को, और मेरा ख्याल है मैं अपने आप को जिस तरीके से मोटिवेट कर लेता हूँ, अपने आप से जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन कर लेता हूँ, एक तो वो, और दूसरा मेरा एक बेसिक फेथ कि नहीं यार, एज अ मुस्लिम आल्सो, कि आपको पता है कि यार रात के बाद दिन आना है, सारा वक्त बुरा वक्त नहीं चलेगा. देयर इज अ बिगर पावर व्हिच इज एट प्ले, जो आपको संभाल लेगा. वो भी आपकी अपनी ही कॉन्वर्सेशन है, मगर वो फेथ, वो बिलीफ, और अपने अंदर बिलीव कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, पहले भी वक्त गुजरा है, ये वाला वक्त भी गुजरेगा, वो. और तीसरा, मैंने अपने आप को जो है वो क्वांटिफाई करना छोड़ दिया है. जिंदगी की सक्सेस को जब तक मैं क्वांटिफाई करता रहा हूँ, तब तक मैंने देखा है कि मैं हमेशा स्ट्रेस में रहा हूँ, और मैंने हमेशा उस चीज़ का इम्पैक्ट नेगेटिव देखा है अपनी हेल्थ पे, अपनी हर तरह की एबिलिटीज के ऊपर. तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि
मैं समझता हूँ कि शायद मैंने स्टार्ट की है और अभी बहुत लंबी जर्नी है, जब मैंने अपने आप को भी जानना है, अपने फेथ को और स्ट्रॉन्ग करना है और मैंने इन चीज़ों को लाइफ से और छोड़ना है। तो आई थिंक बिल्कुल मुझे ठीक, एटलीस्ट इस चीज़ से पीस मिलता है, मुझे बिल्कुल ठीक बात है। इससे करेज मिलता है कि यार मूविंग फॉरवर्ड अगर हम इन 2-3 चीज़ों को ही अपनी ज़िंदगी में अपना लें, तो मेरा ख्याल है कि ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनको एड्रेस करने में और इमोशनल चैलेंजेस को एड्रेस करने में हम लोग बहुत बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। Thank you so much to the two of you. I'm just going to put the recording to an end, and I hope we have more conversations like these, find out more about each other and learn from each other. So thank Absolutely. you.